As the developing country seeks to improve their standard of living, they totally rely on the fossil fuel burning. लेकिन यहाँ पर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो डेवलप कंट्री थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टोटली रिलाय करते थे फॉसल फ्यूल बर्निंग पे, क्योंकि उनकी जितनी इंडस्ट्री थी वो जो ताकती वसाइल थे जिसमें कोयला, ऑयल एंड गैस शामिल थी, वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स व्हाई दोज वर द टाइम व्हेन वी हैव द टोटली रिलाई ऑन द फॉसल फ्यूल बर्निंग. सो इंडस्ट्रीज वर रन बाय द कोल और द ऑयल as a power resource. So those were actually the fossil fuel. अब जब ये फॉसल फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हुई तो उससे हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पे उसका इम्पैक्ट आज हम देखते हैं, और उसमें हमें एयर कंटेमिनेशन, वाटर में कंटेमिनेशन, सॉइल में कंटेमिनेशन मिलती है. बट जैसे जैसे अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरक्की की बात जब करेंगे तो वो भी टोटली रिलाई ऑन द फॉसल फ्यूल. लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ चाइना, जिसमें उनकी इंडस्ट्री जितनी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ एक्चुअली रिलाई टोटली ऑन द फॉसल फ्यूल जनरेशन. But some of the areas are recently run by the renewable energy resources. So इसमें we have example of the hydropower, which is totally rely on the evaporation from the lowland area and precipitation at the highland areas. So that is actually the water content that present in the air. So in the form of we see the water actually used as a power generation, और इससे हमें हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. So same is the case with the sun. Sun is a source of energy. So हमें जो solar energy है that is actually controlled by the sun, जो short wave radiations हैं. Now the wind is very important for the generation of the power. So here we have example of the desert regions, जहाँ पर friction कम है, coastal environment वहाँ पर भी friction कम है. So that's why the wind is used as a power generation. Now, one of the renewable energy resource is biomass. It is a biological material derived from living organisms. In the context of biomass as a resource for making energy, it refers to plants or plant-based material. So, biomass जो है is one of the renewable energy resource, और totally rely हम करते हैं इसके plant के ऊपर. As an energy source, biomass can either be used directly to produce heat or indirectly after converting it to various forms of biofuels. Now, wood remains the largest biomass energy source, include forest, residues and even municipal waste, which is in the solid form, वो भी biomass के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. So not only the natural resources in the form of forest जो मौजूद हैं वो भी biomass में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसे wood is the best example. Same is the case with the जो आपके solid waste हैं वो भी हम biomass की production में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Industrial biomass can be grown from numerous types of plants, including corn, poplar, willow, sorghums, sugarcane, bamboo, and a variety of trees species ranging from eucalyptus to palm oil. So all these are actually the type of the plants which can be used for the generation of the biomass. Now, biomass is one of the oldest fuel known to humans. Consists of such material as fast growing plant and crop waste, sawdust and wood chips, animal waste and wood. Biomass contain chemical energy that comes from the sun radiant energy, which photosynthesis organisms use to form organic molecule. Biomass is a renewable form of energy when used no faster than it is produced. Deforestation and desertification can result when biomass is overused. Biomass cannot replace fossil fuel. The entire photosynthesis production of the continual amount
to only half of our current energy use, and that would means devoting it to no other use, including food, paper, and construction material. So biomass fuel, which can be a solid, liquid, or gas, is burned to release energy. So solid biomass such as wood is burned directly to obtain energy. Now, biomass as energy can be used in those areas where we have sugarcane production. So mostly in South Asia में इसकी production sugarcane की मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया शामिल हैं. वहाँ पर sugarcane production है, जहाँ summer rainfall है. We have second most important area South America में, that is Brazil. So those areas can generate energy from the biomass through sugarcane, जो उसके as a raw material use हो सकता है उसमें. Now top 5 countries generating electricity from biomass. So इसमें we have two examples. Blue line जो है इस actually belongs to USA, जिसमें abrupt rise आई है 1950 के बाद. उन्होंने totally जो उसकी जो energy requirement थी उसका जो 15% था is controlled by biomass. So उसमें जो change आई है that is actually dependence of the biomass जो generation है. और अभी भी उसमें जो है स्टेबल है, बिकॉज दे आर स्टिल यूजिंग बायोमास एज एन एनर्जी रिसोर्स. लेकिन क्योंकि अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, इसलिए इसमें जो राइज है वो स्टेगनेंट है. बट वी हैव सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है दैट बिलोंग्स टू चाइना, जो रेड लाइन है. इसमें 1960s के बाद उसमें बड़ी माइनर सी चेंज है, बट 2000 में इसमें अब्रप्ट चेंज आई है, बिकॉज द चाइना जो है इज़ टोटली रिलाई ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसकी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. सो शुगर केन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द चाइना. सो दैट्स वाई जो रॉ मटेरियल है इज़ अवेलेबल, एंड इसमें जो अब्रप्ट राइज है दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन. It is possible to convert biomass, particularly animal waste, into biogas, and biomass can be converted to liquid fuel, especially methanol and ethanol, which can be used in internal combustion of engine. In many parts of the world, automobile fuel must contain 10% or more ethanol, and many highly performed racing cars run entirely on ethanol. So the biomass used for electricity generation varies by region. Like agriculture जो waste है is commonly used in Mauritius or rely on the sugarcane जो उसके remains हैं. Same is the case with the Southeast Asia where rice जो husks हैं वो use होते हैं for the production of the biogas. So here we have the certain areas which are specialized in production. Now, conversion of biogas or biomass to biofuel can be achieved by different methods, which are broadly classified into thermal, chemical, and biochemical methods. So these are the things where we have the generation of the electricity through the biomass.